हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अभी मैं यहाँ डैलस से यहाँ का जो मौसम का हाल है वो बता रहा हूँ। कल रात यहाँ पर -10 टेम्परेचर था और आज सुबह से ही स्नोफॉल बाहर चालू हो गया। खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते ही मैं दंग रह गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन आउटसाइड। तभी मैं पिछवाड़े में गया बैकयार्ड में, तो वहाँ भी देखता हूँ कि पूरा बैकयार्ड स्नो से भरा हुआ है। इट्स स्प्लेंडेड, मज़ा आ गया देख के। हालांकि टेम्परेचर काफ़ी लो है और तो मैं अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा हूँ कि भाई घर से बाहर निकलूँ, लेकिन घर से बाहर निकलना इतना सहज नहीं है क्योंकि यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। तो वो सब करके मैं गैराज में गया। जाने के पहले मैं इधर का देख रहा हूँ कि बैकयार्ड में पूरा बर्फ जमी हुई है, काफ़ी मोटी बर्फ थी। तो इसको मैं एंजॉय कर Snow hat. It's a thick snow, in fact. In one night. You can see srp You can hear the sound of snow. Now actually falling has stopped. अब मैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए गैरेज का शटर उठा रहा और बाहर का नज़ारा देखते ही तो बिल्कुल आश्चर्यचकित। क्या गुड व्यू है बाहर में, बिल्कुल जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ब्यूटीफुल 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 mesmerizing view. Very thick snow, pit sounding pit. Oh, my footsteps. Feeling wow. This side it's beautiful. The rooftop is also fully covered. बर्फ की ये सफेद चादर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है एंड गिविंग ए different beautiful look, as if it's a totally white world. Everything is white here, everything. Oh, now the children have started playing. Now they are sweeping and making a big heap. Oh, how such a big heap has been made by this little girl.
Beautiful, beautiful. Oh, with her small, small hands. Oh, snow is falling. Oh my God. अरे भाई, अरे यार, क्या हो गया खराब? These little girls brought these cardboards from their house to slide on the ice, a sort of skate on the ice. But due to shining of sun, the snow had started melting. A rapid small thin layer of ice on the floor, as a result of which the skating could not be possible. It's a big heap of snow created by the children. Although they could not be satisfied with this little quantity of snow, but anyway, they could play within this limited options only. Yes, be it little quantity or higher quantity, the children are busy playing. Oh. And do you know what I'm doing? I'm picking up some snow from my mountain. Oh, it's so cold. After 2 days of this snowfall, we got the information that nearby lake is frozen. So we have gone to see the lake, frozen lake, and we found that the middle portion is completely frozen, which you can see from here. And what a beautiful reflection of sun over the ice, frozen ice. Beautiful. This is the view of Dallas, other part completely frozen, downtown of Dallas frozen. So it's a beautiful one.